The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. The prayer is for Christ to dwell in the hearts of believers through faith and for them to be rooted and firmly established in love. It asks for the power to comprehend the width, length, height, and depth of God's love with all the saints. It prays for believers to know the love of Christ, which surpasses knowledge, so that they may be filled with all the fullness of God. This is the word of the God. Today we have come together with mixed emotions and happiness, not just to say goodbye, but to honor and celebrate the incredible journey of our dear Reverend Sai Ricken, our beloved Vice Principal, mentor and guide, who has become a cherished part of our Anselm's family. Father was born in a beautiful town of Kanyakumari in Tamil Nadu to late Mr. Saharaj and Mrs. Mary Stella, and lived a life deeply rooted in faith. He grew up nurtured by strong values, which became the foundation of his journey in faith. Answering the divine call, he joined the minor seminary St. Teresa's Mershali Ajmer in the year 2005, and in 2016 was ordained into priesthood, marking an unwavering dedication to the church and to education. His academic excellence is reflected in his achievements, having pursued BA, B.Ed, and is specialized with a licentiate in canon law. But beyond these degrees, it was his passion for nurturing young minds and hearts. Throughout his ministry, Father served in multiple roles as Assistant Parish Priest of Immaculate Conception Cathedral, Ajmer, Vice Rector at the Minor Seminary, Ajmer, Parish Priest and Manager at St. Teresa's Church, School, Larpura, and presently as Vice Principal at our own St. Anselm's School, Ajmer. He has held each position with humility, wisdom, and a deep sense of responsibility. From his intellectual depth, gentle demeanor, and unwavering patience, whether it was organizing events, managing school responsibilities, sharing moments of prayer, and heart-touching sermons, he did it with a sense of grace and sincerity. Here at St. Anselm's, Father has been more than an administrator, a steady pillar, a compassionate listener, a visionary leader. His patient advice and encouragement has touched the hearts of countless students and staff members, and has always approached every situation with grace and understanding. We are reminded that farewells are not just endings, but acknowledgement to journeys well traveled. Dear Father, your time has left a legacy of excellence, discipline, kindness, and faith. Father, as you prepare to embark on a new chapter as Principal of St. Paul's School, Bara, and Parish Priest of St. Francis Xavier Church, we extend our deepest gratitude for your selfless service and dedication. May God bless you abundantly in all your future endeavors. Wherever you go, may you carry the spirit of Anselm's with you as you touch the lives of many more. Father, you will always be cherished as a part of our Anselm's family, as we carry your memory in our hearts. On behalf of the St. Anselm's family, once again, we wish you good luck. Thank you, dear Father, staff of St. Anselm's family. Today, we have gathered here with hearts full of gratitude, respect,
and a touch of sadness as we bid farewell to a wonderful person, a devoted priest, and a guiding presence in our school, Reverend Father Amit Roshan. Reverend Father Amit Roshan is a devoted servant of God and a beacon of hope in our community. Born on 28th September into the loving family of Mr. Augustine Lakra and Mrs. Veronica Topo, Father Amit Roshan was guided by strong values from an early age. Father Amit's educational journey includes completing his 10th from Kendra Vidyalaya, Kota, and 10th from St. Anselm's School, Ajmer. He further pursued his BA from Nagpur University, B.Ed, and M.Ed from reputed institutions in Ajmer. He completed his philosophical and theological studies from Nagpur Seminary. Father Amit was ordained as a priest on 8th April 2018, a day that marked the beginning of a journey filled with spiritual devotion and dedicated service. He has served diligently at Bhavani Kheda, Minor Seminary, Suket, and Lajpura, where his compassionate leadership earned him deep respect. During his tenure as Vice Principal at St. Anselm's, Ajmer, Father Amit Roshan has stood as a pillar of strength, radiating calm and thoughtful leadership. He has played a significant role in the successful organization of all the school events through his careful planning and unwavering commitment. His outstanding administrative abilities were also evident in his role as Secretary to the Bishops, a position he fulfilled with dedication, utmost loyalty, and discipline. Now, as Father sets forth on a new academic journey, pursuing a Master's in Social Work at Nirmala Niketan, Mumbai, we lift our heartfelt praise to the Lord, asking Him to guide you with wisdom, courage, and peace as you walk through this new path. Reverend Father, may you continue to grow in grace and purpose, and may each step forward be filled with blessings and fulfillment. We remain deeply thankful for your tireless dedication and faithful service to this institution. Thank you. With best wishes, St. Anselm's family. With hearts full of joy and gratitude, we come together not only to celebrate but to acknowledge the remarkable achievements and contributions of Reverend Father Jeevan Neil Lobo, who has been more than just a leader at St. Anselm's School. He has been a guide, a mentor, a friend to many of us. Now, as he begins a new chapter in his priestly ministry, taking up the role of assistant parish priest at St. Joseph Church, Mala Road, Kota, we can't help but reflect on his incredible impact on our school community. Under his guidance, St. Anselm's School has flourished academically and spiritually. Father Jeevan's example of faith, kindness, humility has touched the lives of all who have had the privilege to work alongside him. Born on 18th March 1994, Father Jeevan spent his childhood rooted in the serene and faith-filled land of Mangalore, Karnataka, nurtured by the love of his dear parents, Mr. Joseph Lobo and the late Mrs. Norma Lobo. His life has been a beautiful testimony to God's call and his faithful response. We also acknowledge the love and support of your sister, Miss Nikita Lobo, who walks beside you in prayer. As a young man filled with energy and compassion, you have embraced the priesthood with great humility and courage.
Your priestly motto, "Do as I have done for you," John chapter 13, verse 15, speaks volumes about your heart for service. Just as Christ serves the masses, so you serve his people through teaching and ministry. Dear Father, your ordination on 13th April 2023 marked a sacred beginning. And though still early in your ministry, your witness has already touched many. As you step into this new responsibility, we hold on to the Lord's promise in Jeremiah 3:15. Your life reflects a spirit of continual growth academically and spiritually, and like St. Paul encouraged young Timothy in 1 Timothy chapter 4 verse 12, we too encourage you. Let no one look down on you because you are young, but be an example to the believers in word, conduct, love, spirit, faith, and purity. In addition to your spiritual calling, we recognize your unique gift and expertise in computer and technology, a skill so much needed in the modern world. As you pursue your CEX certification and continue exploring the digital realm, we are reminded of how God equips his servants with many gifts to build his kingdom in new and meaningful ways. Father Jeevan, we want to express our sincere gratitude for your dedication and service to St. Anselm School. We appreciate all the time and effort you put into this school over the years. You have always been a guiding light for our staff and students. Your guidance, support, and willingness to help have been invaluable. While we will miss your presence, we are proud to send you forth with joy, knowing that your leadership, faith, and digital savvy will bless the people of your new congregation. On behalf of all gathered here, I offer you my heartfelt congratulations and best wishes for your future endeavors. We look forward to witnessing your continued success. With best wishes and blessings, St. Anselm's family, Ajmer.
देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो हम हैं दिल है दीवानगी, दीवानगी 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 है। ना कोई ना है पर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। What? Just move it. Everybody just move it. If you're feeling this spot, put your hands up. If you wanna get down, put your hands up. One time, let me see you just move it. Everybody just move it. If you're feeling this spot, throw your hands up. If you wanna get down, put your hands up. What? चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आज का दिन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मैं एक लंबे सेवा काल के बाद आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैंने इस संस्था में पिछले 28 वर्षों तक कार्य किया है। जब मैंने यहाँ कदम रखा तो मैं एक अनजान, अनुभवहीन, कुछ डरा और संकोची व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे संस्था ने मुझे अपनाया। सहकर्मियों ने साथ दिया और समय के साथ ये स्थान मेरे लिए एक परिवार बन गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने फादर एनिकेट, फादर जोस मथाइस, फादर लूर्द, फादर कैंसियस, फादर सुसय मणिकम, फादर जोस कुट्टी और हमारे फादर नैन्सन की छत्र छाया में रहकर पूरी ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। फादर नैन्सन ने खुद मुस्कुराते हुए हमें भी मुस्कुराने की सीख दी। मैं सभी फादर्स का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी अध्यापक गणों का उनके सहयोग, स्नेह व आदर के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस दौरान मैंने अपने सहयोगियों से बहुत कुछ सीखा। विगत कुछ वर्षों में मैं बस कंडक्टर, स्कूल ऑफिस, लाइब्रेरी, एग्जाम सेल से जुड़ा रहा। वहाँ से मुझे मिला स्नेह और आदर मेरे लिए अविस्मरणीय है।
इस संस्था से जुड़ी हर याद, हर रिश्ता मेरे दिल के बेहद करीब रहेगा। यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल और वे रोज की भागदौड़, सब कुछ आज बहुत याद आ रहा है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ कार्य करते हुए मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर उनकी प्रदान कर पाया और उनकी कृपा से आज मेरा बेटा BCA कर रहा है तथा पुत्री ईश्वर की शरण में रहकर सिस्टर के रूप में कार्य कर रही है। ईश्वर की शरण में कार्य कर रही है। ये ईश्वर की असीम कृपा है कि साला परिवार में मेरा समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। आज मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ। मन भाव विभोर है, आंखें नम है। खुशी या गम से कहना मुश्किल हो रहा है, पर इतना जरूर कहूँगा कि आप सभी का आभार जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया, मुझे स्नेह सम्मान दिया। आपकी मदद प्रोत्साहन के बिना ये सफ़र इतना आसान नहीं था। अब जब मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ तो मन में एक खालीपन जरूर है, लेकिन संतोष इस बात का है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। मैं संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आगे भी मुझसे संपर्क बनाए रखें। अगर मेरी कभी ज़रूरत पड़े तो हमेशा उपस्थित रहने की कोशिश करूँगा। यूँ तो कहने के लिए बहुत कुछ है, पर इन चंद पंक्तियों से अपने भावों को व्यक्त करना चाहूँगा। अब विदाई का वक्त आया है। दिल में सिमटी यादों का साया है। जो साथ थे वो याद बन गए, जो पल जिए वो खास बन गए। कभी सीखा, कभी सिखाया, हर रिश्ते को दिल से निभाया। जब कभी मुस्कुराए, कभी आंखें भीगी, इस सफ़र में हर एक ऋतु बीती। ना कोई शिकायत, ना कोई मलाल, साथ आप सबका रहा हर हाल। रखिए दुआओं मेरी झोली में, मैं रहूँगा सदा आपकी बोली में। धन्यवाद। As we gather to honor and celebrate my dad's remarkable work and contributions, it is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of my family. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to my father for your dedication, hard work, and commitment over the past 28 years. Your contributions have left an indelible mark on all of us, and we are deeply grateful for the positive impact you have made. पापा, आपको आपके निष्ठापूर्ण और ईमानदार कार्य के लिए धन्यवाद देती हूँ, जो आपने 28 वर्षों में कड़ी मेहनत से किए हैं। A special thank to Reverend Father Nelson, Principal of this prestigious school, Reverend Father Sai Regan, the Vice Principal, Reverend Father Amit Roshan, Reverend Father Jeevan Lobo, Reverend Father Cosmos Shekhawat, Reverend Sister Vinaya Primary in Charge, Reverend Sisters, and Ma'am Shama, the Primary Coordinator. And to you, dear teachers, students, and co-staff, for your support, appreciation, and your presence have made this occasion memorable. You have been with my father from last 28 years. Thank you for your guidance, valuable words, and your love have made my father to give his best to this institute. May God bless you all and all your endeavors made to bringing up this institution and fulfilling God's mission.
My sincere gratitude to Reverend Father Nelson, current principal of the school, and thanks to all the fathers whom my father worked with. For being in your presence, my father has learned a lot. I'm thankful for you that you have seen in him good qualities, talents, and contributed to his progress so that he can give his best in this institute. Thank you for recognizing his qualities. Thank you to organizing committee for your meticulous planning and coordination. Your efforts have ensured that this event runs smoothly and beautifully, providing us with a fitting tribute to my dad's service. We are also grateful to the speakers who shared their heartfelt words and memories. Your tributes have beautifully captured the essence of his contribution and legacy. A big thank you to the catering team for the delicious food and excellent service which we are going to have now. Your efforts have added a special touch to our celebration. To the technical support team, thank you for ensuring that all the arrangements were in place and that everything runs seamlessly. Your behind the scenes work is greatly appreciated. मैं आप सभी को स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो आपने इतने साल मेरे पिता के साथ काम किया है, उनको समझा, उनके साथ योगदान दिया और उनके इन 28 वर्षों को और भी यादगार बनाया. Thank you for being with him. I would like to thank everyone who have contributed to making this farewell a memorable and heartfelt occasion. Your presence and participation have made this event truly special. Time goes by so very fast. It's so hard to believe it's time for your retirement, time for feeling free. You have worked so very hard to make this dream come true, and no one deserves it any more than you. You have had some rough times. You have made it through them all. You made the best of what life brings, and today you have stand tall. No matter what work you have done, whether big or small, how you have done that left the remarkable legacy to everyone. I wish you days of happiness, not filled with any strife. I hope that your retirement years are the best years of your life. इस कविता से शुरू कर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस स्कूल में इतने वर्षों तक निष्ठापूर्वक सेवा दी है. मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं स्कूल जाया करती थी और पापा हमेशा मुझे उठाकर बाय करके स्कूल चले जाते थे. वो दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और अब पापा का रिटायरमेंट हो रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा. मुझे याद है जब मम्मी पापा को बोलती थी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, छुट्टी ले लो, और पापा केवल स्माइल करके स्कूल चले जाते थे. और मम्मी बोलती थी, तुम्हारे पापा कभी छुट्टी नहीं लेते, अपने परिवार के लिए भी नहीं. और मैं सोचती थी क्यों है पापा ऐसे, पर आज एहसास होता है तो कह सकती हूँ उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा से अपने कार्य को किया. He carried out his work with full devotion, no matter how many difficulties he faced. फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं, फर्क पड़ता है कि आप उसे कितनी निष्ठा एवं ईमानदारी से करते हैं. वो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं. बस उनसे कुछ भी कहो, हमेशा एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती है. शायद इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम मुस्कान रखा. मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी
कि उन्होंने मुझे एक अच्छे और गुणी संस्कार वाले परिवार में भेजा। मुझे हमेशा से मेरे पापा ने सिखाया है हार्ड वर्क क्या होता है, डर कर नहीं लड़कर मुश्किलों का सामना करना। परेशानियों तो बहुत आएगी दुनिया में, पर खुद पर दृढ़ विश्वास रखना। चाहे मुसीबत की घड़ी में कोई ना मिले, पर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि विश्वास जो उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है वो हमेशा कायम रखना। Today, proudly I can say that he is my father, and I am the daughter of such father who makes me deserve best out of my weaknesses and trials. आखिरी में मैं एक कविता अपने पिता के लिए समर्पित करना चाहूँगी। वो प्यार करते हैं हमसे पर कभी बताते नहीं, वो जानते हैं सब कुछ पर कभी जताते नहीं। उनकी भी हसरतें अधूरी है बेशक, लेकिन कभी दिखाते नहीं। वो टूटते हैं हर दिन जिम्मेदारियों तले, लेकिन कभी डगमगाते नहीं। वो थक जाते हैं जिंदगी की भाग दौड़ से, लेकिन कभी ठहरते नहीं। हमारे अरमान हमेशा पूरे करते हैं, इसलिए कभी अपने सपने सजाते नहीं। वो जो कुछ कमाते हैं सब हम पर लुटाते हैं, लेकिन कभी इतराते नहीं। चाहे जो परिस्थिति हो सामने, लेकिन कभी घबराते नहीं। वो सुबह को सबसे पहले उठकर देर से सोते हैं, लेकिन कभी इटलाते नहीं। हर त्योहार कपड़े पूरा घर नए पहनता है। अभी तो लिए हैं नए मैंने, ये बोलकर वो कपड़े सिलाते नहीं। चाहे शरीर थक जाए, लेकिन फिर भी मजबूरी जताते नहीं। वो पापा ही होते हैं जो अपने लिए कभी कमाते नहीं। We love you, Papa. Thank you for being such a loving and understanding father. Above all, I thank God for the gift of all these those who are part of our family and leaving us for something better, something beyond. I thank God for them in whatever way possible they have given to this institution to their maximum capacity. Fathers were my right hand. Whenever anything given to them, I could always depend on them. And these two sisters, they deserve such a farewell in our company for one reason. They were doing much more than what we were doing. They were doing much more than what we could never do. That is their prayerful support. 12 hours every day in our campus, they kept praying for all of us, the students, the campus, the teachers, and all the people, the needs of the country and the world. In every way, their support was always there. And if we were safe here in the campus, sisters, fathers, more than teaching, more than doing anything physically, their presence surely was a blessing for all of us. So dear fathers and sisters, individually I do not want to take any personal things to tell them. I have a lot to tell them, but we don't have much time already. We are running short of time. But something common, all of them, if you just look back, they always have smiling face. You agree? All of them. Even if I am tensed or worried, that's my experience. Anyone you meet on the way, is you forget your tension. Always smiling. And very simple. And in humility they do their work. These are very common in all 5 of them. It's not an exaggeration. That is my experience. So thank you, dear fathers. Thank you, sisters, for your wonderful service, help, and all the blessings that we have received through your presence, through your company, to this institution and all of us. Thank you. God bless you all. फ्रैंकी फ्रांसिस के साथ मेरा सिर्फ 3 साल रहा। मैं तो सिस्टर मुस्कान से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा मैंने देखा है।
एक बात जो इन फ्रैंकी फ्रांसिस के फेयरवेल के बारे, विदाई के बारे में सोचने लगा, बस एक सवाल मेरे सामने आया, वो मेरे अंदर से नहीं, टीचर्स के मन में कुछ परेशानी थी। ये परेशानी ये थी, इनके जैसे काम करने वाला भी कौन मिलेगा। अगर फ्रैंकी फ्रांसिस होते तो हमें कोई टेंशन नहीं रहती, हमें किसी बात पूरे विश्वास के सारा काम इनके ऊपर छोड़ सकते हैं। तब इनके बाद कौन है, वो सवाल का जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं है। इनके बाद कौन है? यस, इस सवाल में सब कुछ है कि फ्रैंकी फ्रांसिस कैसे काम करते थे, और ऐसे किसी के बारे में मैंने आज तक सुना नहीं, ऐसे कोई सवाल मेरे सामने आया नहीं, ना किसी टीचर के लिए या ना कोई दूसरे स्टाफ के लिए। पहली बार ऐसे सवाल है, इनकी जगह पर अभी कौन आएगा। आपका समर्पण मैंने देखा है, आप चुपचाप से काम करते थे। आपके बारे में आज तक मेरे पास एक कंप्लेंट नहीं आया पिछले 3 साल से। उस सिस्टर में मुस्कान बोल रही थी आपके बारे में, आपके टैलेंट्स के बारे में मुझे पता था, बिल्कुल नहीं पता था इनके टैलेंट्स, जब तक अशोक इधर आकर कुछ बोलने लगे। इनके अंदर और भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने यही सोचा था इनके बारे में, चुपचाप से अपना काम करते हैं, लेकिन इतनी बदमाशी और इतने नटखट मुझे पता नहीं था। फादर भी बोल रहा था बहुत कॉमेडियन है, ये सब मुझे नहीं पता था। लेकिन आपके जो समर्पण से जो काम आपने किया है आज तक, और जो भी प्यार और प्रेम आपने लोगों को दिया, हमें दिया, और ये टीचर्स का बर्थडे याद रखना, उनके लिए गुलदस्ता रखना, ये सब बहुत अच्छी बात है। ये सब मुझे पता नहीं था, बट आपकी फैमिली की अभी की परिस्थिति देखकर मुझे जरूर ये मैं बोल सकता हूँ, ईश्वर ने आपको काफ़ी आशीष और कृपाएँ दी हैं। बच्चे तो सिस्टर बनी है, एक तो अपने पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, परिवार खुश है। वही खुशी जो ईश्वर देते हैं उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वो आपकी डेडिकेशन, समर्पण की वजह से है, आपके प्यार और प्रेम की वजह से है। तो आपको दिल से बहुत धन्यवाद, हमारे मैनेजमेंट की ओर से, टीचर्स की ओर से, संस्था की ओर से, हर तरह आपको धन्यवाद आपके समर्पण के लिए। और आगे आपके जीवन हमेशा कुशल मंगल हो, ईश्वर की कृपा आशीष आपके साथ, आपके फैमिली के साथ रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।